आज हम बात करने वाले हैं जी मेडिकल नॉलेज जानने के अंदर कि केटोराडोल इंजेक्शन क्या होता है। टोराडोल ketorolac is used for the short-term treatment of usually before and after medical procedure and after surgery more comfortably so that you can return to your normal daily activities. This medicine is a non-steroidal and anti-inflammatory drug and is used also in surgery and emergency drug. रोहन बॉडी जो भी होती है हमारे अंदर सिर्फ पेन होती है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा केसेस में ऐसा इमरजेंसी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि कटोल इसको हम दो तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं आईवी और इंट्रामस्कुलर दोनों तरीक़ों से किया जाता है। नो यूजेस ऑफ द केटोलिक इज यूज्ड relieve moderate sort of pain in adults usually in after surgery. Ketorolac is a class of medication called NSAIDs and it works by stopping the body production of a substance that causes pain, fever, and inflammation. There are the side effects of upset stomach, nausea, vomiting, constipation, diarrhea, gas, dizziness, and drowsiness may also occur.